लुई लांग्रेज नाम एहार नामकरण करा जायछि। साधारण भावे एहाकू L1 भावे जना जाए। एभली 5टी पॉइंट सूर्य एवं पृथ्वी मध्य रही जोंठी सूर्य एवं पृथ्वीर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होइथाए एवं सेंट्रीफ्यूगाई फोर्स होई जाए। समान रही थाए उभयंकर माध्याकर्षण शक्ति। एभली स्थान रे कोनोसी वस्तु को रखागले ताहा सहजरे स्थिर रहिबा सह कम शक्ति मध्य आवश्यक करिथाए। प्रथम लैंग्वेज पॉइंट पृथ्वी ठारू सूर्य मध्य प्राय 15 लाख किलोमीटर दूर रे रही एवं आदित्य L1 को आमे उत्क्षेपण करिछे लैंग्वेज पॉइंट L1 को एवं जेउठी पई सेठारे पहुंचबा पई ताकु 4 मास समय लागिबो एवं वर्तमान गोटिए परे गोटिए सफल उत्क्षेपण होईछि। गोटिए परे गोटिए पर्याय रे आगो बढ़ी चलीछि आदित्य L1 एवं सेठारे पहुंचबा परे अनेक किछि तथ्य हासिल करबाकू चेष्टा करिबो आदित्य L1। भारत रे एहा होछि प्रथम सौर्य मिशन। सूर्य को अनुध्यान करिबो आदित्य L1 सैटेलाइट। सूर्य संपर्क रे गवेषणा पई इसरोर ये प्रथम अभियान। सूर्यर वायुमंडल एवं चुंबकीय क्षेत्रर अनुसंधान लक्ष्य रखा जाइछि। सूर्यर कोरोना सौर शिखा सौर झड़र अध्ययन करिबो। सूर्यर कोरोना मंडल विकिरणर परीक्षा करिबो आदित्य L1। सूर्य वायुमंडल रे परिवर्तन को मध्य लक्ष्य करिबो। केते परिमाण रे केते समय रे किभଳି भाबरे परिवर्तन हेउछि सूर्यर वायुमंडल रे बा सौर्य मंडल रे पृथ्वी उपरे सौर्य वायुमंडलर प्रकोपर मध्य परीक्षण करिबो। the near Earth space weather, because these can have an effect on the life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements, and apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres, and how does Aditya L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important, as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are two unique instruments built by URAV Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy hour 200 kV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these two instruments, along with the other two instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well, that's a very good question, because first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument and multi-direction, and it measures particle, field and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya L1 absolutely unique, because we are going to measure remotely, in situ and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPECTS payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know, because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming, and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the ASPECTS payload, because it consists of two sensors,
Swiss and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the process which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankara Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrostat and Aditya L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. And that is something which especially a heliophysics community could utilize it, because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle, because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community? This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters, that the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about. आपण माने सुनुथिले किभଳି भाबरे वरिष्ठ वैज्ञानिक मानकर मत रहुथिला जे किभଳି प्रोसेस रे आमे आदित्य L1 को उत्क्षेपण करिछि, कोन हमर लक्ष्य रहिछि, किभଳି भाबरे भारतर प्रथम सौर मिशन सूर्य को अनुध्यान करिवो। कारण आमे समस्त जानिछे सूर्यंकर 7टी परस्त रहुछि, 7टी लेयर रहुछि, से सब लेयर को भेद करी सूर्यंकर समस्त तथ्य गुढ़ तथ्य को वर्तमान आदित्य L1 परीक्षण करिवो।
कोर बा आभ्यंतर तापमात्रा आम जदि जानुछे सूर्यंकर कोर बा आभ्यंतर तापमात्रा 1.5 कोटी डिग्री समस्त को जना जितेबाला आमर राज्य में 50 डिग्री तापमात्रा हो जाउछि सेतेबेले देह हाथ किभଳି जळिला भଳି होउछि सूर्य एक उत्तप्त पिंड एवं कोर बा आभ्यंतरीण क्षेत्र में सूर्यंकर तापमात्रा रहुछि 15 कोटी डिग्री एवं सूर्य पृष्ठ बा फोटोस्फियर तापमात्रा सूर्यंकर बाह्य जेतेबेले कोर रु आमे बाहर को आसुछे ताहाले तापमात्रा धीरे धीरे कमी कमी आसुछि एवं फोटोस्फियर जो रहिछि तार तापमात्रा रहुछि पाखापाखि 6000 डिग्री 15 कोटी 1.5 कोटी डिग्री रु 6000 डिग्री को वर्तमान कमी छी किंतु सबुठारो बड़ प्रश्न रहुछि बा गोटे बड़ तथ्य आधार करिवार रहुछि समय जे कोरोना स्फियर को नहीं कोरोना स्फियर आहुरी बाह्य स्तर सबुठु बाह्य स्तर कोरोना मंडलर तापमात्रा किंतु 10 लाख डिग्री ये गोटे बड़ प्रश्न साइंटिस्ट मानक पई एवं ताकू भेद करिबा पई सौर मिशन रो मूल लक्ष्य रहुछि जेतेबेले कोनोसी एक उत्तप्त पिंड पाखरु दूरकु आमे जाई थाउ सेतेबेले तापमात्रा मध्ये धीरे धीरे कमी थाए किंतु सूर्यंकर आभ्यंतरीण बा जेतेबेले कोर एरिया रे 1.5 कोटी डिग्री रहुछि धीरे धीरे ताहा कमी फोटोस्फियर पाखरे 6000 डिग्री की आसुछि फोटोस्फियर पाखरु बाहर को जेतेबेले बाह्य आभ्यंतर जेते बाह्य को आमे आसुछे सेतेबेले कोरोना मंडलर तापमात्रा रहुछि 10 लाख डिग्री ताहा बहुत दूर रे रहिछि किंतु एते मात्रा रे कोरोना मंडलर तापमात्रा काई ता हेउछि वर्तमान समय सबुठारु बड़ प्रश्न एवं तार रहस्य खोजी बाहर करिबो आदित्य एल1 सूर्यर माध्याकर्षण शक्ति को मध्य देई जाई थाए कोरोना मंडलर कणिका कोरोना मंडलरू शक्तिशाली सौर झड़ सृष्टि होइथाए सूर्यर चुंबकीय विकिरण शक्तिशाली पृथ्वी आड़कू माड़ी आसीथाए पृथ्वीर चुंबकीय क्षेत्र किंतु आमकू सौर झड़रू सुरक्षा देइथाए किंतु ए सबु बाबदरे वर्तमान आदित्य एल1 परीक्षण करिबो पृथ्वी ठारू 15 लाख किलोमीटर दूर रे रहिबो एल1 पॉइंट रे रहिबो सेठारे रही अनबरत 5 वर्ष पर्यंत वर्तमान काम करिबो आदित्य एल1 5 वर्ष धरी एल1 पॉइंट रे रही परीक्षण करिबो सूर्यर कोरोना स्फियर फोटोस्फियर क्रोमोस्फियर रो अनुध्यान करिबो सौर पवन एक्सरे विकिरण सौर कणिकार टेक्निक अनुध्यान करिबो कोरोना मंडलर रहस्य भेद करिबो जे सूर्यंक ठारू सबुठारू बाह्य रे कोरोना मंडलर तापमात्रा एते अधिका काहीकि ये सबु बाबदरे वर्तमान आदित्य एल1 सफलतार सहित परीक्षण करिबो ए आशा समस्तंकर कारण जो निर्धारित समय रहितला ठीक 11:50 रे उत्क्षेपण करा जायछि आदित्य एल1 को एवं गोटिए परे गोटिए फेज देई वर्तमान आगो बढ़ी चली आदित्य एल1 लैंग्रेज पॉइंट एल1 रे जाई पहुंचबो से 4 मास समय लागिबो पृथ्वी पृष्ठरू ताहा 15 लाख किलोमीटर दूर रे रहिछि सेठारे पहुंची अनेक गुड़िए गुढ़ तथ्य आमकू देबो बोली समस्तंकर आशा रहिछि कारण जो भली भाबरे चंद्र अभियान रु वर्तमान आमे अनेक किछि तथ्य पाउछे जो सबो तथ्य को लक्ष्य करा जायतिला सेथरु गोटिए गोटिए तथ्य सामना को आसुछि एवं सेथिरे मध्य पेलोड रहितिला लैंडर विक्रम रोभर प्रज्ञान रे रहितिला समस्त पेलोड एने कार्यक्षम समस्ते अनेक किछि तथ्य देउछंती सेही भली आदित्य एल1 रे मध्य 7टी पेलोड रहिछि एवं से सबु अनेक किछि तथ्य आधार करिवो एवं इसरो को पठाइबो अनेक किछि गुढ़ तथ्य मिलिबो सूर्यंक बाबदरे ए आशा समस्तंकर आमे समस्ते जानिछे जे सूर्यर अध्ययन पई वर्तमान सुधा अमेरिकार महाकाश गवेषणा एजेंसी नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी एवं जर्मन एरोस्पेस सेंटर पृथक पृथक भाबरे हेउ बा मिलित भाबरे हेउ मिशन करि सारिछंती एहा बाद नासा एकाधिक सूर्य मिशन मध्य करिछि एथिरे एस होउ विंड हिनोड सोलार डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी विंड स्टीरियो शामिल 16 मिशन को नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी रे मिलित भाबरे लॉन्च करा जायतिला किंतु गोटे बड़ रहुछि जिनिस जे सूर्य अध्ययन रे वर्तमान पर्यंत सबुठारु बड़ उपलब्धि नासार पार्कर सोलार प्रोब मिशन पाइछि जहाकी सूर्यर सबुठु निकटरे पहुंचिबारे एकमात्र महाकाशीय यान समस्त आमे जानिछे पृथ्वी ठारू सूर्यर दूरता 15 कोटी किलोमीटर रहुछि एवं नासा पठाइथिबा पार्कर सोलार प्रोब मिशन सूर्यर अति निकटरे पहुंची लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य एल1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से
दूर हो जाता है। इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार के भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरू स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरू स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated.
After exit from SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दे आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसकी गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में क्रूज स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event. सीधासलख आपण मैंने देखुले किभଳି भाबरे भारतर प्रथम सौर मिशन वर्तमान आरंभ हो सारी गोटे पर गोटे पर्याय अतिक्रम कर सूर्य को अनुध्यान करने आदित्य L1 सैटेलाइट वर्तमान आगक आगक बढ़ी चली 4 मास समय लगिब लैंग्वेज पॉइंट L1 रे पहुंचवाई एवं सेठारे पहुंचवा परे अनेक किछि तथ्य आमको सकल शक्तिर आधार सूर्यंक विषय रे प्रदान करिब। सेही सफलता को वर्तमान समस्तंकर अपेक्षा रखुछि। समय सरी आमर स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु। नमस्कार। हॉकी स्टिक छाड़ी कांग्रेस रो हाथ धरुचंती कंफर्टेबल हेई पालेनी चाकरी रे तापर सेटा मो निजे डिसाइड करली कि मो राजनीति रे जेबी किंतु कांग्रेस रे आसीबर कारण काहे कि राहुल गांधी तंकर लीडरशिप मते भल लागे। आपण निश्चित भाबे ट्रॉफी धरि के आसंती राजनीति रे भी एई धारा आपण बजाई रखि परिबे। राजनीति रे भी आसे तो मो सेटा ट्रॉफी से राजनीति ट्रॉफी में पाई गले और मो खुशी हेबे बहुत खुशी लागे मते। आशावादी अछंती जितिबा को नै कि टिकट मिले मो बहुत आशा रे अछि जितिबा में बहुत उत्साहित। लोक भी चाहउचंती कि प्रभु तिर्की ठिया हुअंतु माने चाहउचंती प्रभु तिर्की ठी गोटे भलो लीडर या भलो यंग